नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री राम एसएसबी टीजीटी रोटे नुआ वीडियो को समस्त को वेलकम। तो बाकी जो भी व्यूअर्स माने अछंती तो बाकी आमे ए जो एसएसबी टीजीटी रो जो आमे पढिबा बा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया बा मैराथन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया तो बेसिकली सेतरे मैक्सिमम क्वेश्चन आमे दीटा चैप्टर को नै पचारिया। गोटे होची दैट इज द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बा सर्कुलेशन चैप्टर ह्यूमन हार्ट रिलेटेड आ गोटे रहइबो दैट इज द डाइजेशन रिलेटेड बा जोटा कि न्यूट्रिशन रिलेटेड। ठीक अछि एंड अगेन वेलकम टू एवरीवन तनुश्री पतित पावन मधुस्मिता ओके चलो समस्त ठीक ठाक अच्छो ओके जय जगन्नाथ भगवान समस्त को मंगल करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटेस्टिनल विली अमंग द फॉलोइंग। जनरली इंटेस्टिनल विली एटा बाय मिस्टेकली ओयूटी लिखाइ छ तो आको तुम स्किप करो हला। तो टीजीटी पिलांकर क्वेश्चन बट एटी बाय मिस्टेकली एटा मेंशन करे छ को स्किप करो। चलो सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटेस्टिनल विली। इंटेस्टिनल विली को नै कि कोटा होची नॉट करेक्ट। देखो आंसर अर्जिता लिपिका 1D बढ़िया पिला हमर फैंटास्टिक पिला सीरियसली एते बढ़िया से आंसर दोछ एंड फटाफट आंसर दोछ। चलो कोन हबो दे पजेस द माइक्रोविली परफेक्ट दे इंक्रीज रेड कलर टा बढ़िया लागबो ए कलर ओके दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक अछि हमें जानि छे सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहा हमें कोन कहउचे ना विली कहउचे। तो ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर छोटो छोटो एपिथेलियल सेल्स थाए जहा को हमें माइक्रोविली बोली कहउचे। एंड एपिथेलियल सेल कोन करे ना इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन दे आर सप्लाइड विथ द कैपिलरी एंड द लैक्टियल्स। हमें जति गोटे विली को जूम करिया सो विली भीतर जनरली लैक्टियल्स थाए एंड आल्सो सपोज दिस इज लैक्टियल्स एंड आल्सो ब्लड वेसल भी थाए। ठीक अछि तो लैक्टियल्स ब्लड एटा होची जदि हम लैक्टियल्स करले ए गोटा होची रेड कलर होची ब्लड वेसल एंड एटा होची विली ऊपर छोट छोट एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट अछि जा को हम कहबे माइक्रोविली। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटली रॉन्ग। हमें जानि छे maximum absorption takes place in the small intestine and the maximum absorption villi is important and villi is the finger like projection of the mucosal layer. Generally mucosal layer ro finger like projection in the small intestine is called as villi right। समस्तिंगर शशि रेखा शुभम बढ़िया सो villi रे maximum all to all absorb होंती बट बेसिकली एडी क्वेश्चन जो डी ऑप्शन देछि केवल एंड केवल फैट अब्जॉर्ब हुए सेटा भूल। ठीक अछि तो एवरेज क्रिक ब्रो तो तुम पई टारगेट तो भाभी कि चलो से 150 पाखा पाखी 150 चलो 97 95 डॉक्टर प्रभात तुमर बढ़िया अछि। सो वेटनरी पई तुमको ट्राई करो कि 140 प्लस जेतु प्लस 2 भलो अछि 10th प्लस 2 चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आसो हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द duodenum एंड कैरी। बढ़िया क्वेश्चन हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट को नेकी क्वेश्चन को हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द duodenum एंड कैरीज कोन हबो। बढ़िया क्वेश्चन हमें जानि छे सपोज दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम बोथ बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट। बढ़िया प्रत्याशा लास्ट को पचारिबो नल कमेंट्री भी करिवो मु कहि देबे हला। प्रत्याशा डोंट वरी 93 78 कहि दे प्रत्याशा तो से 140 प्लस धरि चलो। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस बोथ बाइल एंड पैंक्रियाटिक देखो टिके जदि हम शॉर्टली एक्सप्लेनेशन कर दबा तो माने जानि छ बट फिर भी टिके एक्सप्लेन कर दबा। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टोमक एंड हियर दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज तो सपोज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज duodenum and duodenum रे जनरली pancreas is there. Pancreas is important to release the pancreatic duct and pancreatic duct the pancreatic juice release हुए and suppose here is the liver तो liver ru generally bile release हुए and here is the that is the gallbladder तो सब मिसिले hepatopancreatic duct हम जानि छे hepatopancreatic duct रे both bile and pancreatic juice हला बुझिथिबा आई थिंक तमे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एठी मते क्वेश्चन पचारे जिवो दैट इज which enzyme present in the saliva is important for the digestion of carbohydrate। digestion of carbohydrate pai which enzyme is responsible that is present in the saliva। options are amylase and the second options for you
that is lysozyme, and the third option is lipase. Which enzyme is important for the digestion of carbohydrate in the saliva? कौन हबो? सर नीट रिलेटेड सिलेबस पढ़े डॉक्टर नीट सिलेबस जदि तुम एबे तो टाइम नहीं पढ़िया पे बट फिर भी जदि पढ़ी परिवो तो बेटर है ना डाइजेशन टा नीट रे कटा है बट पढ़ी परिवो. थैंक यू कितिस. चलो and answer is kono, that is salivary amylase. Salivary amylase is an enzyme which is present in your salivary juice and it is strictly important for the digestion of carbohydrate, and 100 to 100% carbohydrate that is amro mouth re digestion हुए नहीं, only 30% of the carbohydrate digestion takes place in your mouth, you have to remember, right? चलो salivary amylase, or we can say that ptyalin enzyme. What is the pH of salivary juice? What is the pH of salivary juice? What answer? What is the pH of salivary juice? 6.8, 1.8, 7.8. What is your answer here? 6.8, 1.8, 7.8. What is the salivary pH? 6.8. बढ़िया. चलो एथरे आसीबो तुमको देन मते को कि bile. Generally bile is important, or bile is important for the fat, na for the carbohydrate, na for the protein. For which one bile is important? बा हमें generally bile जो pigment देखिए इस तरह bile salt अच्छे, and bile salt is important for the fat ना carbohydrate ना protein. कौन वा answer? Bile is important for carbohydrate, protein, fat. कौन वो Lakshmi killer, that is bile salt which is important for the digestion of fat, right? Emasculation of fat में bile salt is important. Okay, चलो next question जीवा. Which of the following is not a common disorder associated with the digestive system? Generally digestive system को नहीं कि कोटा होची गोटे not a disorder. कौन बा आंसर? Okay, which of the following is not a common disorder associated with the digestive system? Digestive system को नहीं कि कोटा गोटे common disorder नुह. And हमें जानी चे dysentery digestion को नहीं करी, that is dysentery कौन हुए? Dysentery, jaundice, and also jaundice रे liver affected हुए तो digestive system related problem. Diarrhea, but answer is tetanus. कितने जनों का answer tetanus? बढ़िया समझती करो tetanus. सर क्षमा करिए सर क्लास करिए, इट्स ओके पायल. tetanus, ओके. तो जनरली मते को कि tetanus this is a bacterial disease ना viral disease ना fungal disease. कौन बा आंसर? देखिए कितने जनों का आंसर ठीक अछि. tetanus is a bacterial disease, is a bacterial disease or viral disease or fungal disease. को कौन हो? Perfect answer. Okay, tetanus is a bacterial disease, right? Viral नुह. voice of Krishna बढ़िया अछि. हेला tetanus is a bacterial disease and bacteria ना होची कोन? Clostridium tetani. हेला चलो नेक्स्ट बा. A gland not associated with the alimentary canal. Generally को gland ता alimentary canal सो associated नहीं. A gland not associated with the alimentary canal. कौन हो? A gland not associated with the alimentary canal. Answer दियो कौन हो? A gland is not associated with the alimentary canal. Answer दियो. Easy question. ओके बढ़िया क्वेश्चन. आंसर दियो समझते. कौन है? दैट इज ग्लैंड नॉट एज alimentary canal होची लिवर हबो, salivary gland हबो, adrenal नुह. अच्छा मते को कि जनरली pancreas रो जो
एंडोक्राइन पार्ट रहिला एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पई को दीटा हार्मोन ऑप्शन दउची जोटा कि रिलीज हुए पैनक्रियाज रु इंसुलिन एड्रेनालिन ग्लूकागॉन थायरॉक्सिन को दीटा हार्मोन जोटा कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पई इंपोर्टेंट एंड आल्सो रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास एंड इंसुलिन ग्लूकागॉन कोन हबो आंसर दियो एंड समस्त आंसर आई थिंक परफेक्ट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ओके ओके चलो पढ़े अच्छी नेक्स्ट जीवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पाखे दैट इज एट जदि हमें क्वेश्चन पचारिया लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर ह्यूमन बॉडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन हबो लार्जेस्ट gland in the human body which of the following option is the largest gland in the human body कौन आंसर परफेक्टली आंसर दियो समझते which of the following option is the largest gland in the human body कौन आंसर ओके लिवर राइट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड देन जदि देखिया which of the gland is responsible for the emergency time which gland is responsible for the emergency time कौन आंसर which gland is important or which gland is responsible for the emergency time M killer Satyajit O Mahanti perfect which gland is important for the emergency time and the answer is adrenal gland as you know that adrenal gland is again divided into the cortex and the medulla generally adrenaline hormone is released from the medulla perfect okay and the adrenal medulla which is responsible to release the adrenaline and adrenaline is otherwise called as emergency hormone so answer hoji adrenal then ame jodi kahiba which of the following option is called as an heterocrine gland which gland is called as heterocrine gland it means it can act as both exocrine and endocrine kon habo which gland is otherwise called as heterocrine gland it means it can act as both exocrine and endocrine Lipika Tanushree MD Kausar Jitin Dr Prabhat okay that is pancreas is the answer next question jiba okay तो देखो तुम भाई कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अछि you have to join the column 1 and the column 2 कोन आंसर परफेक्टली देखो एंड आंसर करो column 1 that is the bio macromolecules of foods and the human digestive system stomach thecodont serosa and here in the column 2 that is alimentary canal and associated glands embedded in the jaw bones outer wall of the visceral organs and converted into simple substance go and I think this is the easiest question what answer Pushpanjali Tanushree Dr Prabhat Sanjula B and I am janiche the bio macromolecules of food and in the digestion the macromolecules should get converted to the micromolecules so answer is converted to the simple 1 minute okay then human digestive system as you know that the alimentary canal and the associated glands and the stomach generally stomach hochi kono the JSF bag right and thecodont what is the term thecodont each teeth is embedded in the jaw socket bone is called as thecodont then serosa is the outer layer of the visceral organs right and jaha bhi tome column 1 column 2 asibo chalo next question jiba which of the column and column 2 select and this is the most important question you can say duodenum epiglottis glottis and cecum kon answer what is the perfect answer Dr Prabhat sir it actually mo mama ka account it's okay MD Kausar Ankita Tanushree Sonalika Soumya Khageshwar Arjita kon answer
And I am janiche what is the important function of epiglottis. Epiglottis is a elastic cartilage which is important to prevent the backward movement of food to the trachea. I am janiche suppose this is the mouth and suppose this is the windpipe ba jaha ko ame swasya nali boli koi pariya. Suppose here is the windpipe and here is the esophagus, or we can say that the food pipe, and generally epiglottis, and I am janiche the opening of the windpipe is called as glottis. The opening of windpipe there is a cartilage elastic like structure. It is called as epiglottis. जार काम कौन जनरली फूड टा काले ट्राकिया भितर को एंट्री हे जिवो एंड हम जानि से सिंगल ड्रॉप ऑफ फूड जदी भी जनरली ट्राकिया भितर को आसुची बा विंड पाइप भितर आसुची एंड लंग्स रे पहुंचुची, दैट इज डेथ होवर भी चांसेस थाए बिकॉज़ दैट इज द थोरासिक चैम्बर भितर प्रेशर टा अल्टरनेट हे जिवो. सो दैट एपिग्लोटिस रो काम होची कोन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड. सो एपिग्लोटिस कोन हो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. देखो glottis is opening of windpipe and epiglottis cartilaginous flap, and cecum is that is the small blind sac, and duodenum is U-shaped structure emerges from the stomach. Chalo next question jiba. And you have to join the enzymes. Generally what are the enzymes responsible for the digestion of dipeptide, fat, nucleic acid, protein? कौन आंसर? प्रताप सर मो नेम नहीं नाती मु सबुले एंड ठीक देउची. प्रताप मु तम नेम नेली टॉक्सिक गेमर. ओके सी शेप दैट इज सोनालिका प्रिंटिंग मिस्टेक इज पुराना बही अनुसार यू देची बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द शेप ऑफ द डुओडेनम इज सी शेप. ओके चलो बट ऑप्शन है नाही सी जेतु यू हमें कनेक्ट कले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. दैट इज व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन, एंड एज यू नो दैट lipase is important for the digestion of fat. So option A lipase for the fat, and nuclease is important for the digestion of nucleic acid, and as you know that carboxypeptidase is important for the protein, peptone and protease, and dipeptidase is important for the dipeptide. Okay, right? Chalo next question. Dental formula in the human being. What is the perfect dental formula in the human being? कौन answer? Perfect dental formula in the human being. 2 1 2 3 3 2 2 3. What is your answer here? I think समस्त ठीक है. अर्जिता, प्रताप, सोनालिका, पुष्पांजलि, प्रताप, तनुश्री. ओके हैप्पी द हल्क. आई कौन आंसर? सरोज, प्रताप. ओके 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3. चलो नेक्स्ट. Liver is the largest gland and is associated with the various function. Choose one of the options below which is not correct. Liver को लेकर question, and I think this is the easiest question because ये question ने जहाँ भी देजी तुमको आसीबो. कौन आंसर? लिवर टाको हमें लार्जेस्ट ग्लैंड को चाहे लिवर फंक्शन देचे आ भितर कोटा होची जनरली लिवर फंक्शन को डिनोट करूनी. कौन आंसर? ओके आंसर कौन हो? दैट इज लिपिका सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ गैस्ट्रिन, राइट? एंड हम जानिचे लिवर रो काम होची मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट रो मेटाबॉलिज्म बाय लिवर फंक्शन करे केमती. एंड हम जानिचे जहां भी हम एक्सेस ग्लूकोज खाउचे तो ग्लूकोज टा जनरली स्टोर हुए कोठी लिवर रे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो दैट इज हम कहि परिया ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रे लिवर रो काम करे. यस राइट. एंड डाइजेशन ऑफ फैट हम जानिचे लिवर विल रिलीज बाइल, and generally bile ro pigment जो सब रहला bilirubin, biliverdin, bile salt. तो bile salt is important for the emasculation of fat and the formation of bile important, but the gastrin no, because gastrin is a hormone which is released from the G cell of stomach. चलो next. Gastrin टा generally released from the secretion of hormone called gastrin. Gastrin टा generally liver रो release हुए नहीं. चलो next question. Okay, mark the right statement among the following. Trypsinogen is an inactive enzyme. Trypsinogen is secreted by the intestinal mucosa. Question पढ़ो and the बढ़िया question direct answer question I think तुम को आसीबो. अर्जिता, हृतेशना, अंकिता, secretion of hormone is called as gastrin, right? खगेश्वर, जगन्नाथ, स्मृति रानी, क्षितिज, जतिन, लिपिका. Trypsinogen is an inactive enzyme. Correct पचार जी. ओके देखो and हमें जानी चाहिए trypsinogen. One second. Trypsinogen is an inactive enzyme, perfect, and trypsinogen टा active form को convert हुए जहाँ टा that is trypsin. ये टा perfect अच्छी.
ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा आमे जो देखिबा जनरली ट्रिप्सिनोजेन टा कोड सिक्रेट हुए एंड स्ट्रिक्टली हमें जानी छे ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास but here the option is trypsinogen is secreted by the intestinal mucosa so wrong because trypsinogen टा generally exocrine part of the pancreas ru release हुए ठीक अछि exocrine part of pancreas next enterokinase is secreted by pancreas it is also wrong enterokinase is an enzyme which is responsible for the conversion of trypsinogen to trypsin generally trypsinogen को trypsin रे convert करे पे enzyme responsible that is enterokinase so it will be wrong bile contains trypsin भूल तो option 1 is correct चलो next question I think समझ को आस्थिबो easy question अछि next question जिबा that is contraction of right ventricle pumps blood heart ro question contraction of right ventricle pump out the blood कोन हबो मितु लिपिका pulmonary artery कोन हबो आंसर that is okay Jatin kon about the contraction of right ventricle pumps the blood suppose this is the structure of heart and ame jani che jodi tuमको एटी क्वेश्चन पचरा जीवो human heart is ectodermal origin endodermal origin or mesodermal origin what is your answer human heart is ectodermal origin mesodermal origin or endodermal origin kon answer human heart is ectodermal origin endodermal origin or mesodermal origin what is your answer here and am jani che that is the human heart it is mesodermal in origin it is perfect and समस्त आंसर भी ठीक अछि मितु राजलक्ष्मी हैप्पी क्राफ्ट्स विथ तेजु and सौदामिनी लिप्सा and that is Pratap MD Kausar right human heart is mesodermal and myogenic जदि क्वेश्चन पचारे बो human heart it is an neurogenic in nature or myogenic in nature हम जानि छै जदि human heart को बॉडी बाहर करबा then भी बीट करबो so that human heart is myogenic in nature चलो तो कोन आंसर परफेक्ट MD Kausar सर आपने तो अब रात को 2 बजे सम सोते पूछे गए तो भी गलत नहीं होगा राइट एते भल से मन रखो दैट इज तमे निदर भी ये जिंस गुडा को तमर मन रही जीवो चलो कोन हबो हां ए क्वेश्चन रे आंसर दबा में सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एज वी नो दैट दिस इज राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सो क्वेश्चन पचर छी कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल हम जानि छी जनरली राइट एट्रिया को डीऑक्सीनेटेड ब्लड आसे फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट थ्रू द इंफीरियर वेना कावा एंड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट थ्रू द सुपीरियर वेना कावा and generally right atrial और right ventricle भितरे there is tricuspid valve तो right ventricle जेतले पंप करिवो through the pulmonary artery देखरि पहुंचो कोडी lungs पाखे for the that is हम जदि कहया for the oxygenation ताल आंसर कोन हबो pulmonary artery एट जदि क्वेश्चन पचराबो all artery carry oxygenated blood what exception all artery carry oxygenated blood then exception कोन हबो all artery carry oxygenated blood but with an exception kon hobo समस्त आंसर that is MD Kausar is smart guy mesodermal pulmonary artery all artery carry oxygenated blood but exception that is pulmonary artery then jo dekhiba that is all vein carry deoxygenated blood and exception all vein carry deoxygenated blood but exception pulmonary vein is one vein which carry a deoxygenated blood okay कोन आंसर दियो परफेक्टली समस्त ठीक अछि pulmonary vein चलो बढ़िया नेक्स्ट जीवा आ भीतर को कि दैट इज जनरली डोर्सल आओटा जो रहिला डोर्सल आओटाटा ब्लड टा कोठ नै कोठ पहुंचे डोर्सल आओटा from which part of the heart dorsal aorta take the blood to which part of the body generally heart ro को part रो dorsal aorta body रो different part को blood नै कि पहुंचाए सोनालिका कोन हबो
डोर्सल आउटा नेकरी क्वेश्चन को आंसर दियो डोर्सल आउटा परफेक्ट डोर्सल आउटा लेफ्ट वेंट्रिकल रू हार्ट टू बॉडी एंड व्हाई द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एनीवन व्हाई ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एनीवन कौन पे हमें जनरली ह्यूमन हार्ट को डबल सर्कुलेशन बोली कहि परिया व्हाई ह्यूमन हार्ट बा जनरली व्हाई द सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन जनरली जदि हमें देखिबा हार्ट को दी थर ब्लड आछी राइट दी थर ब्लड आछी तो कोड कोड ब्लड आछी जनरली तो कौन आंसर दैट इज 2 टाइम राइट जदि हमें देखिया जनरली ह्यूमन हार्ट को गोटे थर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आछी डीऑक्सीनेटेड ब्लड केमती आछी सपोज बॉडी रो डिफरेंट पार्ट रो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ह्यूमन हार्ट को गला देन ह्यूमन हार्ट कौन कला ब्लड टा पंप कला तो सही डीऑक्सीनेटेड ब्लड कोड गला ना बॉडी रो बाहर को गला देन अगेन ऑक्सीजनेटेड हला पर पुणी अगेन हार्ट को आसला सो ह्यूमन हार्ट को ब्लड दी थर सर्कुलेट होउची सो दैट ह्यूमन हार्ट को हमें डबल सर्कुलेशन बोली कहि परिया 2 टाइम ब्लड आसुची प्रताप डबल सर्कुलेशन इट गोस टू हार्ट 2 टाइम फॉर 1 सर्कुलेशन इन बॉडी ओयो चातुई राइट परफेक्ट देन जदि एटा में क्वेश्चन पचारिया हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन फिशेस जनरली फिशेस मानकर केते चैम्बर फिशेस मानकर केते चैम्बर हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन फिशेस मानकर केते चैम्बर 2 चैम्बर राइट एंड फिशेस मानकर को सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ना डबल सर्कुलेशन कौन हबो आंसर दियो दैट इज फिशेस मानकर को चैम्बर सिंगल सर्कुलेशन ना डबल सर्कुलेशन ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ओके कौन हबो दैट इज फिशेस मानकर सिंगल सर्कुलेशन एंड एम्फीबिया रेप्टाइल्स मानकर को गीतांजलि लक्ष्मी शशिरेखा हैप्पी क्राफ्ट्स बढ़िया अंकिता संजुला सौम्या समस्त बढ़िया आंसर है भलसे केयर नियो निजर एंड आराम से पढ़ो बिंदास रे पढ़ो जहां हबो देखा जीवो सिंगल सर्कुलेशन राइट सरोज बढ़िया देन मते को कि एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स मानकर केते चैम्बर हार्ट एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स मानकर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दैट इज एम्फीबिया रेप्टाइल्स मानकर 3 चैम्बर हार्ट ओके देन मते को कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कारो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा लिपिकार आंसर आसला मोलुस्का आर्थ्रोपोडा स्ट्रिक्टली मन रखिबो मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा जो मानकर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनिलिडा एंड कॉडाटा जो मानकर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओके मोलुस्का आर्थ्रोपोडा दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा कॉडाटा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट बढ़िया को एई क्वेश्चन हम करले एबे इजी क्वेश्चन ऑल द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी तो चलो नेक्स्ट तम पय दरकार नै व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स पढ़ो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जेतेबेले वेंट्रिकल रो कंट्रैक्शन होबो सेतेबेले कोन होबो आंसर दियो व्हेन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स जेतेबेले कोन होबो व्हेन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स कोन फंक्शन होबो ताले कोन होबो जनरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल होबो हैला वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्वेश्चन पचारछि एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल माने वेंट्रिकल मसल रो कंट्रैक्शन होबो
तो कौन हम आंसर वेंट्रिकुलर तळे कॉन्ट्रैक्ट करिवो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड समझ आंसर ठीक अछि टिके खाली देखि दबा परे जो पिला माने देखुथिबे ताको बे टिके कोन प्रॉब्लम हो कोन हो टिके देखि दबा वेंट्रिकुलर जतळे सिस्टोल हो सेतळे जनरली कोन हो चलो when the ventricular systole occurs ओके वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो जो देखिबा वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल रो कंट्रैक्शन हबो एंड कंट्रैक्शन हला बेले कोन हबो हम जानिचे ट्राइकोस्पिड valve is present between the right atrium and right ventricle bicuspid valve is present between the left atrium and left ventricle that is जेतोले ventricle muscle रो कंट्रैक्ट हबो एंड अल्टीमेटली हम जानिचे ए जो ट्राइकोस्पिड valve और bicuspid valve क्लोज हबो सो ट्राइकोस्पिड valve क्लोज atrial diastole and seminal valve guiding the pulmonary artery alta तो ठीक है ऑल ऑफ द अबव मते को कि एटी जदि तुम क्वेश्चन पचराबो जनरली व्हाट इज द फास्ट हार्ट साउंड दीप्ति इट्स ओके व्हाट इज द पिंकू भाई योर शैडो व्हाट इज द फास्ट हार्ट साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड जेतबेले प्रथम हार्ट साउंड कोन लव और डब व्हाट इज योर आंसर लिपिका अर्जिता दैट इज लव देन सेकंड क्वेश्चन when the first heart sound love is produced generally केतबेले first heart sound love produce हुए what is your answer here when the first heart sound love is produced during the closure of tricuspid and bicuspid valve during the closure of semilunar valve what is your answer when the first heart sound love is produced during the closure of tricuspid bicuspid valve ना during the closure of semilunar valve ना कोन हबो आंसर कोन हबो समस्त करो आंसर दियो एंड परफेक्टली समस्त करो ठीक भी अछि ओके कोन हबो ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकुस्पिड एंड द bicuspid valve then second question जे तुम पचराबो that is when the heart sound dove is produced generally heart sound dove केतळे प्रोडक्शन हबो कोन हबो आंसर when the heart sound dove will produced what is your answer here during the closure of semilunar valve right okay next question जे देखिबा love and dove these are measured in the instrument like stethoscope or sphygmomanometer love and dove generally measure करिया पई which instrument is used that is the spirometer or sphygmomanometer और कहा को हम कहबा ना that is हम जदी कहबा stethoscope कोन हबो sphygmomanometer is used for the blood pressure but stethoscope we can use stethoscope right चलो next दिबा during the cardiac cycle about -% of ventricle filling occurs prior to atrial closure this is an easiest question and मैं बार बार कहिछि सर्कुलेशन रे पडिला बेले दैट इज तुमको स्ट्रिक्टली मन रखा पड़िबो यू हैव टू रिमेंबर हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लड इज फिल्ड टू द वेंट्रिकल विदाउट एनी atrial contraction and how much blood will fill to the ventricle by the atrial contraction so here is the question and ए क्वेश्चन बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पचारछि आंसर दियो साम्स लिपिका एमआर किलर अर्जिता कान्हा सॉरी सर इट्स ओके कान्हा ऋतुपर्णा दीप्ति बढ़िया अछि ताले आंसर कोन हबो दैट इज 70% of ventricle is filling during the cardiac cycle about 70% ventricle is filling occurs to prior and atrial contraction द्वारा 30% so answer is 70 and 30 चलो बढ़िया अछि 70 and 30 नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा चलो which of the following चलो इजी क्वेश्चन कौन आंसर दैट इज which of the following events do not occur during the joint diastole बेले जनरली को फीचर्स हबनी देखो क्वेश्चन पढ़ो भल से बिकॉज़ तुम जे देखिबो क्वेश्चन को आगे पढ़ो सत्यजीत शशिरेखा तन्मय मधुस्मिता कौन हबो that is which of the following events do not occur during the joint diastole which of the following event do not occur all the four chambers of the heart are relaxed state I think this is the perfect tricuspid and the bicuspid valves open action potential is conducted from SA node to AV node blood from the pulmonary vein and the vena cava flows into the left and right ventricle respectively कौन आंसर हमें जानिचे that is during the joint diastole हमें जानिचे that is every minute रे हमें केते तरह बीट करे
हार्ट बीट करे 72 टाइम्स बा हम कहि परा 72 टाइम्स पर मिनिट बा 1 बीट पे हमको केते टाइम लगे सपोज just for calculation 72 times in 60 second and one time that is 60 by 70 0.8 second and if you divide 0.8 second that is 0.1 second is atrial systole and 0.3 second is ventricular systole and 0.4 second is joint diastole. So joint diastole by resting stage बेले कौन कौन features हुए okay 15 B only C is incorrect. शशिरेखा 0.8 सेकेंड साम्स अर्जिता कान्हा केके सिद्धेश्वर आंसर इज ओके. तो आंसर कौन हम जनरली जॉइंट डायस्टोल बेले ऑल द फोर चैम्बर्स हार्ट आर रिलैक्स परफेक्ट. ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हेतियो सी भी परफेक्ट अछि. एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम SNO टू इवेंट तो ओनली सी इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन होची बी ठीक अछि 15 ऑप्शन होची आंसर होची सी. यस हनीवेल को तुम्हारा व्हाट इज योर डाउट सर नीट एंड ओयूटी रो सिलेबस सेम की दैट इज जदी हम देखिबा नीट रे डाइजेशन चैप्टर कटिची एंड बहुत सारा चैप्टर कटिची बट जदी ओयूटी रो सिलेबस देखिया सो देयर इज नो ऑफिशियल नोटिस फॉर द ओयूटी बा देयर इज नो मेंशन एनी किछि भी मेंशन कराइनी ओयूटी सिलेबस रे. सो तुमको ये भाबी के चढ़ा पड़ो ऑल द सिलेबस आर इंपोर्टेंट फॉर योर ओयूटी. नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनिट एंड दिस लाइन इज इंपोर्टेंट and 100% कहबी maximum पिला भूल करिवे. So question here the amount of blood to be pumped out by each ventricle per minute. Each cardiac cycle रे 70 मिलीलीटर blood pump होय that is called as stroke volume and answer कोन हो here देखो पिला आंसर देबे 100% stroke volume. Stroke volume होची generally OUT एग्जाम तमर CBT मोड रे हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओके कोन हो आंसर लिपिका कार्डियक आउटपुट राइट आंसर इज कार्डियक आउटपुट. देखो मन रखिबो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम भितर 100% पिला मानको प्रॉब्लम हुए कोन ना जनरली भाबंती कि ये मन रखिबो ईच वेंट्रिकल्स पंप्स आउट 70 मिलीलीटर ब्लड इन ईच कार्डियक साइकिल. गोटे कार्डियक साइकिल बा ईच 0.8 सेकंड रे 70 मिलीलीटर ब्लड पंप इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम. बट जेतेबेले क्वेश्चन तुम पढे चारि देला द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनिट एंड हियर इज द ए लाइन को तुमको इंपोर्टेंट धरिया पड़िबो इज वेंट्रिकल पर मिनिट दैट इज कार्डियक आउटपुट. सर रैंडमली क्वेश्चन आता है किसी चैप्टर से और 0 और किसी चैप्टर में 8 9 भी आ जाता है. सो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है क्या कौन सा चैप्टर में वेटेज हाई या लो. एमडी को सर ऑलरेडी वी हैव पोस्टेड ए वीडियो ऑन द YouTube channel that is Bidyasagar Classes. So you can see here what are the weightage of the different chapters. So हमें weightage को कहि परिया but we cannot correctly determine the what is the weightage of what all the important chapters. But हमें prediction करि परिया these chapters are important or maximum question will arise from this chapter. But we cannot predict 100%. Okay, next question चलो. During the cardiac cycle each ventricles pump out about देखो question 8 बोलेला previous question थिला okay MD question right. Previous question thila each ventricle per minute but now the question is during cardiac cycle each ventricle pumps out 70 milliliter of blood is called as and here is the answer is stroke volume. Okay kon of answer stroke volume right. Then jodi eti question pachara what is the formula of cardiac output lipika kon hobo rajalakshmi lakshmi madhusmita gayatri what is the formula of cardiac output what is the formula of cardiac output stroke volume into heart rate stroke volume plus heart rate stroke volume minus heart rate. What is your answer here कौन हबो सर मैम को देह भल गलानी मैम को देह भल हेई गलानी देन तमर क्लास स्टार्ट हे जिवो. stroke volume और heart rate is called as cardiac output and here is the answer stroke volume right. next question कार्डियक आउटपुट देखो सही क्वेश्चन हम पचाले एंड जे तुम क्वेश्चन पचारे जो देखो एडी क्वेश्चन ता तुम लिखो if the stroke volume is for example if the stroke volume is 50 milliliter find out the cardiac output. What is the value of cardiac output if the stroke volume is 50 milliliter. देखिए के जण आंसर ठीक होचे 70 वाचिंग तो 70 वाचिंग भितर जनरली हम देखिए के जणकर आंसर ठीक होची. जदी सर प्लीज मो मेसेज टिके हनीबेल बाबली मेसेज आउथरे प्लीज दैट इज स्क्रॉल हेची लक्ष्मी राजलक्ष्मी यार आंसर होची स्ट्रोक वॉल्यूम टू हार्ट रेट इक्वल टू 500 मिलीलीटर
that is A, stroke volume into heart rate equal to 5 liter A. चलो यार आंसर कौन है MD Kausar, and as you know that stroke volume 50 milliliter and the formula of cardiac output equal to that is stroke volume 50 into 72, and here is the answer, that is 3600 ml by हम कोई परा 360. Okay, चलो next. Which of the following statement is incorrect? को statement है incorrect कौन आंसर? Which of the following statement is incorrect? Yes sir, right. गायत्री, प्रताप, जतिन, तमन्ना. सर मोर 10th रे 84 थिला बट एबे कमी जायछि प्लस 2 रे 60. That is you have to calculate the percentage or average percentage. That is your 10th is 84. 1 minute. And तुमको average calculate करियर अछि. 84. You have secured 84% in your 10th and that is 60% in plus 2. So 4 by 2, that is to 72% average. So you have to secure approximately 155, 160 plus in OUT. Arpita, that is give me your plus 2. You have only sent 68% plus 2 mark. You have to send your 10th mark also because OUT रे दीटा को मार्क कैलकुलेशन करा जिवो. सर मो क्वेश्चन रो रिप्लाई मधुस्मिता, that is तमरो क्वेश्चन थिला कि होम साइंस रे कोन गवर्नमेंट जॉब अछि. Yes, you can do government job after home science and you can Google here what are the jobs opportunity after home science. Madhusmita, you can get a better knowledge from the Google. Okay, chalo next. Which of the following statement is incorrect? Cardiac output of an athlete is much higher than the ordinary man. Perfect. In cardiac in each minute of single cardiac cycle is performed, during each cardiac cycle 2 prominent sounds are produced. Perfect. Lob and dog. Cardiac cycle is includes atrial systole, ventricular systole, jaundice. So answer B is incorrect. Next question chalo. So before going to the next question, तम पाई गोटे छोटो announcement अछि, that is if anyone interested बा हमर भीतर तो TGT बैच चलछि, बट जदी तमर के सानो भाई या भौणी किए भी जदी NDA पाई मोस्टली इंटरेस्टेड अछंती तो बेसिकली NDA पाई हमर स्पेशल बैच चलछि फॉर ऑनलाइन एंड आल्सो फॉर ऑफलाइन. तो जो माने इंटरेस्टेड थिबे देन पेरेंट्स मानको से मानकर जो सानो भाई भौणी अछंती देन नियत रूपे जॉइन करि परिबे. सर प्रताप मोर 85% प्लस 2 70%. 85 and 70. So तुमको approximately say भावो 150 plus. A Mr. Killer 90 and 89. You have secured good mark. So you have to score in OUT Mr. Killer, that is 140 plus. Okay. Sir टिके कहंतु मोनालिसा मोहाली. What is your questions Monalisa? The rowdy world. Sir SC केते? Sir मोर 83 and 68. OUT 83 and 68. That is देखिबा में. Okay, that is 75 from 74. So you have to secure 160 plus. Chalo. Next question. Identify the correct sequence of events in a cardiac cycle. देखो जार भी जा डाउट होची कमेंट करो एंड 100% मु तुम रिप्लाई देबी. 100% रिप्लाई देबी. सेक्शन रो सरू सरू तमे दैट इज कमेंट करो मु रिप्लाई देबी. डोंट वरी प्रत्यय सर. कमेंट दियो बिकॉज़ मझरे मझरे डिस्ट्रैक्शन होची. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए कार्डियक साइकिल. Cardiac cycle generally correct sequence को. What are the perfect sequence in the cardiac cycle? Diastole, atrial systole, ventricular diastole, atrial systole, ventricular diastole, ventricular systole, atrial systole, ventricular systole, joint diastole. कौन अब आंसर को? B. Atrial systole, ventricular systole, and ventricular diastole, ventricular systole, joint diastole. C. Rituparna, Om Prakash comment karo. I will give you answer, don't worry. Answer that is atrial systole, ventricular systole and joint diastole. Okay, right. Lakshmi, Gayatri, Puspanjali, Dipti, Abhishipta. Right, chalo next. First cardiac sound lobe is associated with, and it is the most easiest question. First heart sound lobe केतोले production हुए. When the first heart sound lobe is produced? कौन अब आंसर? Ventricular systole and joint diastole. A. Average 73. That is you have to secure more than 155. Okay. Closure and tricuspid valve, and हम जानिचे the first heart sound is lobe and the second heart sound is lobe. And generally the first heart sound lobe is produced during the closure of tricuspid and the bicuspid valve. चलो ताले कौन होबो?
Answer is closure of tricuspid. And you have to remember, there is no sound is produced during the opening of the closure, during the opening of the valve. Valve ro opening re konosi sound production hoini. You have to remember, only during the closure of valve the heart sound is produced, and during the closure of tricuspid and bicuspid, that is the lobe is produced, and during the closure of semilunar valve the heart sound dub is produced. Clear? Jahar bhi jaha doubt comment karo, I will give everyone's answer. Don't worry, एबे just आमे जो क्वेश्चन डिस्कशन करछे त तमरो आंसर देला बेले नियत रूपे डिस्ट्रैक्शन आसीबो. चलो, सेमिलुनर valve, that is here it's Juneth, right? चलो, first heart sound lobe. First sound so lobe is produced during the tricuspid and bicuspid. Then which of the following statement is wrong for the second cardiac sound? Second cardiac sound by कौन होगा आंसर? चलो, which of the following statement is wrong for the second cardiac cycle? Second cardiac cycle by कोटा wrong? तमन्ना, okay. It is hearted as dub. Generally हम जाने से second cardiac sound रे heart sound production में dub, right? Then it is produced due to the closure of semilunar valve. Perfect. It is clinically significant and it is clinically non-significant. कौन आंसर? बड़े आंसर कौन होगा? And easy अच्छी question. It is clinically कोटा पचारची कि incorrect पचारची, wrong पचारची. तो wrong कौन होगा? D. It is clinically non-significant. एटा clinically significant होगा बोले, ठीक अच्छी. ताले आंसर होची, that is it is clinically non-significant होची आंसर. Then चलो, which of the following is correct about the human heart? Human heart को नेकी कोटा होची correct. कौन होगा? And as you know that if we compare between the atria and the ventricle of the human heart, the chamber of the ventricle is more than the chamber of atria. The volume of the chamber of ventricle is more than the volume of chamber of atria. As you know that is 2/3 part of the heart is ventricle and 1/3 part of the heart is atria. So here the answer is the volume of both ventricles is larger than the volume of both atria. I think समस्त का आंसर ठीक अछि. लक्ष्मी, तमन्ना, सोनालिका, voice of Krishna. Hello sir, today my first class. Sweet. Thank you. I hope तुम क्लास भल लागुथिबो. शशिरेखा, मिस्टर किलर, सर प्लीज रिप्लाई. मिस्टर किलर तुम कमेंट करो, 100% तुम कमेंट रे रिप्लाई देबी. तो राउडी सर पिला को केते मार्क प्लस 2 रहबा दरकार. राउडी ए वीडियो रे तळे तुम कमेंट दियो, मु रिप्लाई देबी हला. ओके, चलो नेक्स्ट इबा. The 8 जो तुम क्वेश्चन पचारे, among the all the ventricles of the heart, generally heart रो सबु चैम्बर भितरु मैक्सिमम प्रेशर टा को चैम्बर रे अराइज हुए? मते को राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. मैक्सिमम प्रेशर विल अराइज इन व्हिच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. कौन आंसर? मैक्सिमम प्रेशर विल अराइज इन व्हिच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. Left ventricle, right? But why? Why the left ventricle will face maximum pressure? Why not the other animals? कौन आंसर? सर एलाई को ओयू टेंटस में राउडी प्लीज कमेंट प्लीज, बिकॉज एटी हमें जे डिस्कशन करिया. दिस क्लास इज फॉर SSB TGT. वॉइस ऑफ कृष्णा. ओके, कमेंट करो, मु श्योर तुम आंसर देबी. डोंट वरी. ब्लड पॉप इज आउट. आज यू नो दैट जेहेतु लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड टाको पंप कले, तो हमें जानि छे लेफ्ट वेंट्रिकल जनरली ब्लड टाको पंप कले, जेहेतु बॉडी रो डिफरेंट पार्ट को सही ब्लड टा जाए, सो दैट मैक्सिमम प्रेशर कोठी पड़िबो, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. सपोज दिस इज द ह्यूमन हार्ट and this is not the perfect structure of human heart. As you know that the structure of human heart is just clenched fist. What for the understanding, I am drawing this diagram. Suppose this is right atria and left atria, right ventricle and left ventricle. Generally left ventricle जो blood टाको पंप करे, से ब्लड टा डोर्सल आउटा देकी बॉडी रो डिफरेंट पार्ट को जाए, सो दैट मैक्सिमम प्रेशर विल अराइज ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? मन रखिबा, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज थिक, राइट? अमंग ऑल द चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज मोर थिकनेस. परफेक्ट. चलो, the heartbeat is of a person is increased at the time of interview due to the secretion of. Suppose first time you are going for interview and in that time that is you are facing nervous, so that in that case tomorrow generally co hormone release हुए. कौन आंसर? What is the answer here? And I think this is the most easiest question.
The heartbeat of a person increase at the time of interview. For example, if you are going for interview for first time, in that case generally co-hormone release हुए. As you know that adrenal gland, and you have to remember adrenal gland is present on the kidney, and adrenal gland again divided into the adrenal cortex and the adrenal medulla, and you have to remember among the cortex and the medulla maximum parts are contained by adrenal cortex, and generally adrenal medulla will release adrenaline. And the most important function of adrenaline is to increase your heartbeat, and also it is important for the glycogenolysis. What is glycogenolysis? Anyone? Om Prakash, voice of Krishna, Ankita. What is glycogenolysis? And where is the glycogenolysis occurs? Ankita, Khageshwar, Honeybee. What is glycogenolysis and what is gluconeogenesis and what is glycogenesis and what is glycolysis? Sir, form B रो एग्जाम अच्छी की सर कौन फॉर्म बी रो हनी बेल बाबली फॉर्म बी तुमको फिलअप करियर अछि दैट इज फ्रॉम द 20 मे रु 15 जून पर्यंत तमरो एप्लिकेशन नंबर देखि out.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट को जाईकी देयर इज नो एग्जाम फॉर द फॉर्म बी यू हैव टू पुट योर 10th marks and also plus 2 marks on your form B, and without form B you are completely that is you are not eligible for your mark. Okay sir, 10th 92 please comment. Okay, generally glycogenolysis kono conversion of glycogen to the glucose and it will take place in the liver. And what is gluconeogenesis? That is the formation of glucose from the non carbohydrate element, that is from the lactic acid or any non carbohydrate element ru jodi glucose production hoche, it is called gluconeogenesis. And glycogenolysis, that means conversion of glycogen to the glucose and when the blood glucose level is low. And egoda jani chame. Okay, glycogen to glucose is called as glycogenolysis. And what is glycogenesis? That means the conversion of glucose to glycogen. Chalo next question. आउ चारटा क्वेश्चन देन हमें लाइव को एंड करिया. एंड आई थिंक तुमको जतिक जण अच्छो दैट इज एंड थैंक्स कि दैट इज एते समय अच्छो तमे. Gluconeogenesis, formation of glucose from the non carbohydrate element. Perfect, that is gluconeogenesis. Genesis means formation and neo means that is from the new source and gluco means that is the formation of glucose from the new source, that means from the non carbohydrate element. Form B apply 1500 खर्च करबा को हेबो कि नहीं? Form B apply किछ खर्च नहीं, that is तुम only 10th and plus 2 रो मार्क दबो आ किछि भी नहीं. ओके कौन हम लिपिका सेबम एनालिसिक ना विटामिन इज निकोटाइन. विटामिन थोड़ी निकोटाइन. निकोटाइन जनरल जे देखिजा दिस इज अ ड्रग्स. विटामिन इज नॉट अ ड्रग्स. सो कौन आंसर corpus callosum. And as you know that corpus callosum is important for the ligation of the two cerebral hemisphere. As you know that cerebrum is a part of forebrain and cerebral hemisphere is ligated together by the corpus callosum. So answer is bundle of his and Purkin's fiber which is related to the heart. Perfect. Ritu Parma, Suman Diksha, Tamanna, bundle of his Purkin's fiber, right? Lipika, Mr. Killer, 26D, Ritu Parna, Puspanjali. Okay, chalo next question. Cardiac center is lies in. बढ़िया question. And maximum involuntary जहाँ भी जहाँ body भीतर involuntary system like heartbeat, like breathing rate, all the involuntary systems are regulated by the medulla oblongata. So कौन अब answer? So medulla oblongata, right? Then जदि question हम पचरिया medulla oblongata, it is a part of forebrain or midbrain or hindbrain. Anyone? Voice of Krishna, what is your answer? Lakshmi, medulla oblongata, this is a part of forebrain or midbrain or hindbrain. Medulla oblongata, Puspanjali, Subhasri, and what is your answer here? Medulla oblongata is a part of hindbrain, right? So देखिबा what is the function of medulla oblongata apart from cardiac center? Cardiac center को छाड़ी की medulla oblongata आउ सब कौन function? That is the coughing, sneezing, whiffing, काशिबा, छिंकीबा, ये सब भी regulated हुए medulla oblongata. Then जदि हमें question पचारिया, suppose what are the functions of hypothalamus? Anyone? What are the functions of hypothalamus? Arjita, Honeybee, hindbrain. Perfect. जब किसको फांसी होता है तब मेडुला ओब्लोंगेटा ही ब्रेक हो जाता है जिस
आसला ओके एबे क्लियर आसला सोनालिका ओके सर प्लीज गोटे क्वेश्चन actually synthesized from the hypothalamus just start करिए audible sir again no audible